always solve problems, and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. tanto que ofrecer.
Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. For you, for you. 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 All the times with you, they just fly by. All the memories pop up on my timeline. Change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you while you talk a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best friend, best friend. Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Could you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born to sing, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. For you, for you. 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 Girl, you always solve problems, and you just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. So hello guys, welcome back to another live stream of तो नहीं कहेंगे guys इसको. वेलकम बैक टू लाइव स्ट्रीम. एंड या आज अपन करने वाले हैं न्यू गेम जो कि अभी अक्टूबर में लॉन्च हुआ, और वो भी एकदम एंड ऑफ द अक्टूबर. एंड या ये PS5 के लिए आया, बट पीसी में जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, बट फिर भी अपन खेल लेंगे यार. पीसी में अपने पास जुगाड़ की कमी थोड़ी है, अपन गेम के लिए कुछ भी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं. सो या लेट मी ओपन द गेम. या आई नो कि तुम सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी ऑन स्ट्रीम, तो मैं उसको फिक्स कर देता हूँ. वेट, नाउ यू कैन सी, आई थिंक सो. अब आ गई होगी स्क्रीन तुम सबके आगे. यस, अब आ गई है. सो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं पता इस गेम के बारे में. जस्ट मेरे को पता लगा है कि गेम बहुत मस्त आ रहा है, चल रहा है. सो या
अपन ट्राई करेंगे, अगर मस्त चल रहा है तो अपन क्यों नहीं खेले फिर। एंड इसका अभी एक डीएलसी पैक भी आने वाला है जो कि इसी कह रहे कि इसी दिसंबर मंथ में आएगा, इसका डीएलसी पैक भी एक। सो लेट्स सी अभी क्या है इसके अंदर। तो इसको सबसे पहले करते हैं अपन एंटर, जो भी इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसके लिए। सो गेम सेविंग, और ये गाइस मैं पहले ही बता दूं कि ये भाई मेरे जीपीयू का गेम का नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो जीपीयू चाहिए मिनिमम वो चाहिए आपको 2060, एंड मेरा जो जीपीयू है वो 1650 है। तो आप कह रहे हो कि कैसे चला रहा है, क्योंकि मरा मरा चलेगा सबसे, ठीक है। तो ये मरा मरा चलेगा। फोटो सेंसिटिविटी वार्निंग, ठीक है वो तो पता है अपने को। सो यार यहाँ पे अपने से पूछ रहा है अपन हाई क्वालिटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अपना तो जीपीयू ही नहीं है एक तो इसके रेंज का। तो अपन जैसा चल रहा है उसको वैसा ही रहने देंगे। ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहिए तो यार, ठीक है कंटिन्यू कर देंगे। इंग्लिश इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन, बॉर्डरलेस फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको, बॉर्डरलेस को छोड़ो। क्वालिटी प्रीसेट लो ही पे ही चलने वाला है अपना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार उसका। तुम सब इतना कुछ स्पॉन्सर करते नहीं कि नया पीसी ले आ जाए। सो भाई साउंड तो काफ़ी अच्छी है, आ रही है मेरे को। इसके अभी कंट्रोल्स भी मेरे को नहीं पता है, मैं तो वही देख रहा हूँ। सिंगल टैप वॉक, कंट्रोल असिस्ट, देखते कंट्रोल्स में चलते क्या है। WASD ओके, लेफ्ट शिफ्ट से स्प्रिंट ओके, स्पेस से डॉज ओके, एफ से क्या करता है, एफ से इंटरेक्ट करते हैं चीज़ों से, ठीक है। एम के लिए राइट क्लिक होता ही है, लेफ्ट से शूट, रीलोड आर से ओके, ये सब तो पता ही अपने को। ई से फ्लैश लाइट टॉगल ओके, क्यू से फ्लैश लाइट रीलोड, मेरे को उसका समझ नहीं आया मतलब। एंड फ्लैश लाइट बूस्ट के लिए अपने को ओके, मिडल बटन माउस का। कंट्रोल से इन्वेंट्री, ये थोड़ा अलग है कंट्रोल से इन्वेंट्री। एंड 1 2 3 4 क्विक स्लॉट वगैरह ओके। टैब से अपना टॉगल माइंड पीस प्लेस ओके, राइटर्स रूम ओके, एंड टॉगल मैप के लिए एम तो आता ही अपना, ठीक है ओके। तो अभी अपने को पता लग गया कंट्रोल्स, तो चलते अभी न्यू गेम। मैं हार्ड वार्ड तो नहीं रखने वाला, नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल रख लेते हैं, क्योंकि भाई अपने को कुछ आइडिया नहीं, अपन ने तो बस डाउनलोड किया है। एंड गाइज मैं ये बता दूं कि भाई इसके लिए 2060 अगेन मैं बता देता हूँ, 2060 जीपीयू है मिनिमम, 2060 है। एंड ये अभी PS5 के लिए ही लॉन्च हुआ है, नॉट फॉर पीसी, बट अपन ने कहीं से जुगाड़ लगा लिया। और ये जो गेम है एज कम्पेयर टू गॉड ऑफ वॉर, ये गॉड ऑफ वॉर से भी बड़ा है। गॉड ऑफ वॉर आपका 60-70 GB का पड़ता है, बट ये आपका हिटमैन के कंपैरिजन जितना है बड़ा, क्योंकि ये 90 GB का है। यस 90 GB का है, GTA को टक्कर देने वाला। क्वालिटी भी अच्छी है इस गेम की काफ़ी। सो लेट्स सी अब क्या होता है इधर। कल मैंने इसको डाउनलोड किया पूरा बैठ के, अराउंड कितना टाइम तो लिया था इसने, क्योंकि भाई जिधर से मैं डाउनलोड करता हूँ वहाँ पे इंटरनेट स्पीड स्लो आती है। मेरा तो वाईफाई दे देगा 20 MB पर सेकंड का, बट उधर एक्चुअल स्पीड आ रही थी कभी 5, कभी 10, कभी 11, 12 से ऊपर तो गई नहीं। 12 भी टच भी नहीं हुई थी, 11.9 या 11.5 समथिंग, तो वो 12 ही मान लो। तो मतलब इससे ऊपर नहीं गई थी, उस स्पीड में डाउनलोड हुआ है। एंड यहाँ पे अभी चालू क्यों नहीं हो रहा है? साउंड तो आ रहा है, नहीं साउंड नहीं, अभी नहीं आ रहा यार। लोड लिया जा रहा है, देखते हैं कब चालू होगा। ओके फाइनली लेट्स गो, हियर वी गो। यार मेरे फ़ोन में स्ट्रीम इतनी पीछे क्यों चलती है पता नहीं। Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. ओके Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. ओके यार, अगर ये मैं हाई क्वालिटी में खेलता ना भाई, मस्त जाने वाला था ये गेम, कुछ भी बोलो। In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. ये हिरन आ गया बे एकदम से।
This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. ओके ये पानी है This क्या? story will eat us alive. लग तो पानी रहा है. This story is a monster. हाँ बे ये पानी है. अभी देखो ना हिरन ऐसे गिरा हुआ है. ओ माय गॉड. लॉर्ड्स इट्स डार्क. ये कौन है? ओके ये अपन है क्या? भाई ये मैं नहीं हूँ भाई. मैं ये नहीं खेलने वाला भाई. ये क्या है? ये इतना मोटा सा मैं हूँ. ये कोई कैरेक्टर हुआ? और ये पहली बार नंगा क्यों है भाई? ये नंगा क्यों है? पहले मेरे को ये बताओ. अबे आवाज बंद हो गई थी एकदम से. अभी अपन वहां से उठे वो हिरन देख के. एंड यहाँ का रास्ता बंद है. वहां चलने से अपने को सीधा ही चलना पड़ेगा. भाई इसकी एंट्री तो बड़ी खतरनाक हुई है. नंगा पुंगा. पर इसके शरीर पे तुम देखोगे ना मिट्टी टाइप से. और आगे से कुछ तो लाइट है बे. वो कोई अबे इंसान है वो. अबे उसने देखा अपन को. भाई पूरा अंधेरा है बे कसम से भाई. मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है. बहुत कम दिख रहा है. यहाँ कोई तो कुछ गड़बड़ है भाई. अजीबोगरीब आवाज आ रही है. पहले मत तो ये पत्ते वत्ते इसके शरीर में कहीं टच वच नहीं हो रहे. ओ हेलो. ओ Oh my gosh, bro. Hello? What the fuck? What the fuck? I don't know, bro. बहुत खतरनाक गूज़बम्प्स दे रहा है ये गेम मेरे को. भाई कोई तो है. हेलो. ये इल्यूजन हो रहा है या क्या हो रहा है? आई डोंट नो. और पहली बात अपन जा किधर रहे हैं? बारिश अलग चालू हो गई है यहाँ पे. यहाँ पे कुछ तो है शेल्टर टाइप. बट इधर मैं कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकता. एंड यहाँ पे लाइट ज़रूर है. बट मैं वहाँ जा नहीं सकता. भाई बहुत अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है इधर. भाई आगे से कोई तो आ रहे हैं. अबे इनने तो मारने लग गई अपने को. अबे इनने तो अपने को मार दिया. ये मेरे को ही आवाज नहीं आ रही है? तुम सबको भी नहीं आ रही?
भाई क्या स्टार्टिंग करी है इस गेम ने। पूरा जंगल है बे यहाँ तो। भाई क्या स्टार्टिंग है, क्या इंट्रो है। अगर तुम इसको भाई हाई क्वालिटी गेम में देखोगे ना भाई, कसम से भाई, मेरे पास नहीं है इतना हाई एंड पीसी कि मैं इसको हाई क्वालिटी में चला पाऊँ, बट सीरियसली भाई इतनी हाई क्वालिटी Hey, गेम kiddo. How are 2023 you? के हिसाब से भाई। I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to. अपन अभी जा रहे हैं कोई जंगल की साइड में, और भाई तुम देख रहे हो सुबह जो हो रही है भाई, What क्या happens when you go on work trips, Mom? भाई क्या ग्राफिक्स है भाई, कसम से भाई। Tell him to stop brooding so much. एक एक चीज तुम डिटेलिंग में देखो भाई इसका। एक सेकंड रुकना। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। I will. Bye, kiddo. ओके, ये अभी ये आवाज बीच बीच में कट क्यों जा रही है स्नैरी किड? Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. ओके, Where she gets that from? ये पीछे चल रही है साउंड, ये देख रहे हो? साउंड पीछे चल रही है, सबटाइटल्स पहले आ जा रहे हैं, और ये बोल Can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. ये ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show अब us सही the हुआ है। crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. रिटर्न 1 इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये मैप है, ये मैप है पूरा। ओके, अपन यहाँ पे अभी यहाँ पे है पार्किंग लॉट में। भाई तुम FBI का लोगो देख रहे हो ना भाई, कितना ब्लर चल रहा है भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हाई एंड ग्राफिक्स नहीं कर सकता, ये वैसे ही इतना नहीं रेंडर कर पा रहा है मेरा पीसी। तो तुम सोचो अगर मैं इसको हाई ग्राफिक्स करूंगा तो कैसे रेंडर करेगा।
Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Any witness to the crime I could use to briefing. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I could use a briefing. Let's talk. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Get the Before we crime get to scene. the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Case brought inside the mind place. Okay. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. Oh. To Okay. sift through clues and work the case. Okay. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Okay. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. तो अभी तो अपने को क्राइम सीन पे जाना है ना. Already hard at work, Anderson. Visiting the mind place does We're not just getting pause the started. game, so be mindful head down the nearby hill to the crime threats. scene. Okay. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. कहाँ पे हुआ था Place भाई to वो? get murdered. If getting back to nature is your thing.
Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Okay, worry body. Let's just see this body, shall we? Okay, yeah. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. तो अभी अपने को क्या करना है इधर? Okay. Body is positioned on the table. Ritualistic. C allows Saga to see active clues which can be placed. Okay. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Investigate the crime scene. यही तो कर रहे हैं अपन अभी. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Okay. और कुछ थोड़ी रह गया इधर. नहीं. Newly discovered clues can be placed upon the open question. Okay. ये लग तो नहीं रहे इधर. That's not right. तो ये कौन सा लगेगा? है? ये भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा. क्या करूं फिर? Keep trying. अबे ये तो लग ही नहीं रहा है इधर. मैं क्या करूं तो? यही तो लगेगा यार पहले.
भाई ये तो लग ही नहीं रहा इस पे, अब मैं क्या करूं भाई? आई थिंक मुझे जूम करके लगाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ओके No. यार यही तो लगेगा ऐसे। एक तो ये हट क्यों जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे लग जा यार, यही तो था एकदम, मैं एकदम भाई Doesn't look right. ये लग ही नहीं रहा भाई ये तो। ना ये बैक हो रहा, ना ये लग रहा है भाई। Saga. भाई क्या करूं मैं, बताओ जरा, इसको क्या करना क्या पड़ेगा? लग ही नहीं रहा इस पे भाई ये। ओके अरे यार इतना सिंपल था Hot क्या? from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The victim, the killers, okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Okay. तो अभी अपन को क्या करना है?
Okay. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. The victim के लिए तो अपनों को किसी से बात करनी पड़ेगी. Learn more about the victim. Talk to someone. अब किससे बात करनी पड़ेगी फिर अपने को? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Okay. अपने को एक मिला है. Clues can be discovered by speaking to people as well as examining your surroundings. तो अपने को एक क्लू मिला है अभी तक. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. What happened after he got fired? So it's missing. मेरे को पहले इसका first जानना, second जानना. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Okay. तो अभी यहाँ से अपन को इनके बारे में पता लगा है. Okay. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Okay. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. 13 साल से गायब था. Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Okay. You can profiling से Saga's mind. Okay. Profiling. Okay, हाँ यार ये इसके में आ रहा था ना night missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there अपन mind read कर सकते हैं. वो भी मरी हुई body इसका. ये भी सही है. otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Okay. Ritual murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. हाँ ritual type जैसे तो मारा था. Yeah. More like a container for something. ठीक है. This mug always cheers me up.
चेक द लेक शोर. ओके, अब अपन को वहां पे जाना पड़ेगा, लेक शोर. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. अपन ही तो आए थे यहाँ से, तो अपन ही दौड़ के चल लेते हैं. Possibly knew. रास्ता तो यही था. Killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Witch's ladle. Doing skinny dipping at this time of year. Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know. There's a piece of paper on the ground. मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of What's their that? own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Okay. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were अगर मैं इसकी थोड़ी ग्राफिक्स बढ़ा दूं तो क्या होगा? मेरा पीसी फट जाएगा. right. This is right up my alley. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. मैंने हल्का सा ग्राफिक्स बढ़ाए और Nightingale came this way. तुमने देखा ना क्या अफेक्ट किया ये हल्की सी ग्राफिक्स में. अगर मैं इसको इतना लो करूँ, बैलेंस पे कर दूँ तो Either he dropped this page. or ओके, the killers बैलेंस left पे it फिर for भी us. ठीक चल रहा है. अभी थोड़ा देख रहे हो ना, थोड़ा लैग कम है. एंड बट यार ये मोशन ब्लर को हटा दें और फिल्म ग्रेन को भी हटा दें तो कैसा दिख रहा I है? should profile Nightingale about this page. अब थोड़ा सही दिख रहा है ना, है ना? हाँ, अभी थोड़ा पहले से बेटर है. और क्या करना चाहिए अपने को? बाकी सब तो लो पे ही है. अबे बट ये अजीब से नहीं हो गए जो मैंने ऑफ किया अभी इनसे. ना ना, ये सही है. I think he came from the lake. But his tracks make no sense.
The victim was one of their own FBI special agent, 13 years now. ये तो अभी पढ़ा अपन ने वही है. Okay. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Okay. यार अभी तो ग्राफिक्स सही करी थी फिर ब्लर आने लग गया ये है. ये बार बार होता रहता है क्या ब्लर ठीक करना. यार ग्राफिक्स तो यार अब मैं क्या बोलूं. हाई एंड ग्राफिक्स पर अगर ये चलता ना वो कसम से जहर मजा आ जाता. मैंने ब्लर इसलिए हटाया यार ताकि है ना थोड़ा एक You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. All I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. yeah. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Shortcut key. Okay. Thanks. Take the car. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Okay, यहाँ पे क्या है? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the We same are name as a all hit in the detective. together hero. Have a
सकते। He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. तो और तो क्या ही है इसके अंदर, और तो कुछ है ही नहीं। Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Oh, भाई ये किधर लगेगा, इसमें लगेगा क्या? बहुत बड़ा केस बन रहा है ये तो। एक केस सॉल्व करने गए थे, 3 मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं, सीरियसली ब्रो। अब और कुछ भी है क्या इधर बाकी? 0 क्लूज। मेन केस अपना ये है, रिटर्न टू द ब्राइट फर्स्ट, टेक द कार। तो अभी अपने को जाना का है, और वो अपने पीछे आ रहा था, वो कहाँ गया? मैप में देखते पहले अपन है कहाँ पे। अपने को जाना है पार्किंग लॉट। यहाँ अपन ने छानबीन कर ली, जब वहां आ जाना। ये यहाँ खड़ा है, मैं कह रहा हूँ वो तो आया तो था साथ में। can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. सॉरी। एक सेकेंड गाइस। या ओके ओके। कहाँ जाना है अभी अपन को? यहाँ पे थोड़ा तेज दौड़ के चल, इतना पैदल पैदल क्यों चल रहा है ये Here एरिया we पे? are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. मेरे को उसको साउंड नहीं आ रहा भाई, गेम की साउंड कट हो गई क्या? भाई ये गेम थोड़ा अलग टाइप का नहीं है? साउंड कट हो जा रहा है भाई कभी कभी। When overwhelmed by the enemy, look for a safe haven. Its healing light prevents the enemy from reaching you. Okay. Use a hand never flare to seen killer- escape. अबे ये कैसे आवाज आती है? Helpful notes and drawings will be added to an area map as you explore. Burn an enemy darkness shield way to expose a source point. Destroying a source point deals devastating damage. गेम है तो सेक्सी, बट हमारा पीसी जो है वो थोड़ा लो एंड है, क्या करें अब। दिला दो गाइस थोड़ा अच्छा जीपीयू 3080 तक तो।
4090 नहीं तो 3080 तो दिला ही दो भाई। यार मुझे मेरे पीसी की भी सफाई करनी पड़ेगी यार, बहुत गंदा दिख रहा है। कल सफाई करते हैं इसकी भी, एक बार पूरा खोल के साफ करना पड़ेगा क्योंकि अंदर पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है भाई। जीपीयू पूरा मिट्टी से धुला हुआ ऐसा लग रहा है। भाई लोड जो ले रहा है ना भाई, इतना भाई कह रहा हूँ ना मैं, 90 GB का है उसका मिनिमम स्पेक्स भाई 2060 है भाई। मतलब अपना GTA 5 भी मेरा पीसी हैंडल कर लेता है अच्छा खासा, मतलब इतना भी लैग नहीं करता है। गॉड ऑफ वॉर भी अपना सही चल रहा था, बट ये गेम मांग रहा है। Damn impressive work so far. अब ये साउंड पता कब की आ रही है? जब अपन कार में थे वो वाली साउंड आ रही है, वो भी रुक रुक के। इतना लोड ले रहा है, तुम एक्सपेक्ट किए थे इस गेम से कि इतना लोड? I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. भाई भाई इतना ज्यादा लोड। जीपीयू यार मेरा हीटअप भी नहीं हुआ है, तुमको अगर मैं बताऊं ना, मेरा जीपीयू बिल्कुल हीटअप नहीं है। और अगर मैं देखूं मेरा जीपीयू यूजेस, मेरा जीपीयू यूजेस देखता हूँ। Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner and get a feel for the town. एक सेकंड रुकना गाइस, जस्ट ये कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरा यार। मैंने गेम को मिनिमाइज कर रखा है, मतलब तुम सबको तो स्टोरी दिख रही है बट मेरे को नहीं दिख Shouldn't रही। keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ओके या मैं आ गया। अभी तुम देख रहे हो थोड़ा लैग कम हुआ है, पहले से तो लैग कम हुआ है। अबे ये क्या, अब ये लोग क्या कर रहे हैं बे? Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. ब्राइट फॉल्स में है, अनडिस्कवर्ड मैप है ये तो। That's how much. रिमेंबर यू। Enough coffee. Oh, that's rich. तो अभी अपने को यहाँ पे करना क्या है? Get it in coffee world. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. ये तो वो वाला मैप था ना। Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. I was Your told deputy that said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Light was fast off. Excuse me. Yeah. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Can you tell me what you saw? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks.
They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. इसने रुका दिया बीच में, पता? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. ये केस क्लोज भी हो गया. सही है इसकी. अब यहाँ पे अपन को नया केस सॉल्व करना पड़ेगा. More about the cult of the tree if I'm going to shut them down. ओके भाई इतने सारे लिटरली. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Okay. तो अभी क्या करना फिर अपने को? Interview the witness at the dinner. अब किसका इंटरव्यू लेना है? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Lao, baby, lao. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. ये कौन है? इसकी फ्रेंड है क्या पुरानी? You back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. बेचारे की पुरानी यादें वापस दिला रही है. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories.
happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. बेचारी की पुरानी यादें वापस दिलाती भाई. Good to see you. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. अब शेरिफ स्टेशन जाना पड़ेगा अपने को. Examine Angel's body, go to the sheriff station. Police is a part of the job. Good to see you. Can't dwell on it too much. इधर और किसी से बात नहीं कर सकते. Hey, how you doing? See you around. चलते हैं फिर स्टेशन ही. All set? All good. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Who else to keep this city clean? Morning, if Sheriff. not I? Looks like you have some guests. Who else to protect its Ah, citizens from morning, the Ted. dangers of unsanitary? Yeah, real important guest. थप्पड़ खाना है तो थप्पड़ खाना है? Always draws a crowd, right? थप्पड़ खाना है? True. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. ओके अपन आ गए हैं शेरिफ स्टेशन. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. क्या लिखा भाई ये? हेलो, एक सेकंड रुकना गाइस. एक सेकंड रुकना गाइस, वेट.
भाई 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 ये क्या है, इतना सारा थोड़ी यार, एक सेकंड रुको यार। लेट्स गो, लेट्स गो। So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? अबे ये कैसी ग्राफिक्स हो रही है बे? Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? वेट गाइस यार 2 मिनट रुको यार। ओके या This looks like text. मेरे को तो खैर कुछ दिख नहीं रहा इधर, पूरी बॉडी ब्लर आ रही है भाई, इतनी लो ग्राफिक्स में क्या ही देखेंगे अपन। The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Time to see what Nightingale's body can tell us.
chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? अब अपने को चेस्ट देखना पड़ेगा क्या? वे ऊपर कुछ तो आया था. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the fuck? ये क्या हो रहा है, bro? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's coming. No weapon. The page said to get... He's coming. Need to be in the light. He can't see me in the light. अपने को लाइट में रहना पड़ेगा. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe heavens will restore. Okay. Vanished. End of chapter, bro. Bro, this is so satisfying game, bro. Literally, this is so satisfying, bro.
ओके साउंड को हटाते हैं. He didn't have a heart, but he still got up. भाई मतलब म्यूजिक से लेके एक एक चीज भाई गेम में भाई है तो The मजा. page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Talk to Cassie. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Okay. Figure out where Nightingale went. Okay. Wait यार 1 सेकंड रुको यार इसमें आया 2 मिनट रुकना जस्ट मैं आया. ओके ओके मैं आ गया गाइस आ गया मैं. अभी चालू करते हैं आगे का एक और चैप्टर खेलेंगे. ओके अब अपने को ढूंढना है फिगर आउट वेयर नाइट वेंट. ओके इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ ना. ये क्यूब क्यों नहीं हो रही. कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो. Must be locked from the other side. और कुछ है इधर. It's not opening. तब तो लॉक्ड है इधर.
Nah. Saga was back at Cauldron Lake. Okay. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Okay. अरे ये तो रेडियो है, इसको तो हटाओ. तो यार अभी तो मिलेगा कैसे जब इधर सब तो लॉक्ड है. ये खोल लें सारा. ये भी बंद है. What should I do now? और उसको ढूंढेंगे कैसे. इधर कुछ केस फाइल वो ले रहा था. पीछे जमीन में तो कुछ पड़ा है क्या. Can't be opened on this side. अपने को गेयर मिला एक, पता नहीं किस चीज का. तो मेरे को क्या क्या करना क्या है इधर मेरे को अभी. इधर करना क्या है मेरे को गाइस. मतलब अभी तो मेरे को कहीं पे भी पूरा तो लॉक हो गया हूँ एक जगह में, ऐसा लग रहा है मेरे को. सब जगह तो अपने को एविडेंस चाहिए.
तो अभी अपने को यहाँ से बाहर ही तो निकलना पड़ेगा। क्या करे भाई अभी? सब तो अपन ने देख लिया है इधर, मेन्यू स्क्रिप्ट एंड Must be locked from the other side. क्या करूँ ब्रो? मैं रीस्टार्ट करूँ क्या इसको अब? क्योंकि अपने को यहाँ से भी चलना पड़ेगा, और चलने के लिए यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। Can't be opened on this side. आई थिंक कुछ तो मेन्यू स्क्रिप्ट अपने को पढ़नी पड़ेगी। हाँ, Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The victim was one of their own. FBI special agent. ये सब तो अपन ने पढ़ लिए ना। फिर अभी अपन रुके हुए क्यों हैं यहाँ पे? फिर क्या करूँ? एक बार रीस्टार्ट कर लूँ क्या? लोड ये तो बहुत पहले वाले लोड हुए हुए हैं।
फिगर आउट वेयर वेंट। अरे तो मेरे को कैसे कैसे पता होगा भाई? भाई क्या खेल रहे? ये एलन वेक 2 है। एलन वेक 2 यार, यहाँ पे कागज रहता है, मैं देख रहा हूँ जितना, बट यहाँ पे मेरे को कोई कागज क्यों नहीं मिल रहा है? The heart is gone too. Did the fucker take it with him? आई थिंक मैंने वो कागज पढ़ लिया है। A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ओके अब जाके आगे अनलॉक होगी चीजें। हाँ वही ना यार। क्या यार, सब तो देख लिया अपन ने, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. चलो। We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. Fuck me. We'll do what we can, man. Okay, आजा। But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right. Mulligan? No, Thornton. Monsters are real. The monsters are real. I need bolt cutters.
terrifying pair. सब चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए. Tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh dear, I'm a tourist. Oh dear, I'm a tourist, and it appears I'm lost in the woods. सब चीजें एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे अपन. क्या पता कहीं पे कुछ काम का ही मिल जाए अपने को. इधर क्या है? My client's Just a moment, been ma'am. here long enough. Someone will be right with you. Are you gonna let me speak to them or not? अभी तो शेरिफ स्टेशन एडमिन. This is the third time I okay. इधर क्या हो? ठीक है, आ जाओ. सब चीजें एक्सप्लोर कर लिए इधर अपन ने. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I want out. I'm at my Something wit's end bad's with you. going down. I can feel it. Let me out. Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. I can't get through this. Okay. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. थोड़ा जल्दी चल ले. ऐसे चलेगा तो कल हो जाएगी. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Did you check out the... Let's go again towards the lake. I need to come... Oh my god, ये क्या हो गया? अब ये फिर साउंड गई यहाँ पे. क्योंकि भाई साउंड आके आती है वहाँ. अरे मैं उल्टा ही चल रहा है भाई. क्या करूँ भाई. लो एंड पीसी. मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकता. Clean, and... Anderson.
I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. भाई मेरा जीप एक सेकंड गाइस return to the heart in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Sorry. अपन शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं नीचे. Hey, hello there. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. You're FBI, right? Breaker's disappearance. Heard you hear Hello. about that, Saga murder? Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. क्या बोल रहा है? My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Okay, we're done for now. What'd you find this? ये तो अपना टिफिन बॉक्स देखा था वही है, उसके आगे तो और कुछ है ही नहीं इसमें. To get you VIP tickets into Coffee World. Just say the word. Thanks. But I don't drink coffee.
We brew our own beer, too. Let's get to the murder side, Casey. Now we're talking. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Confused. Follow this step. Wash hands, take chicken out of fridge, take a nap. कैसे खुलेगा ये लॉक? मेरे को तो कुछ दिख भी नहीं रहा इस लॉक के अंदर. यहाँ पे क्या? Creepy twig sculpture? और क्या क्या है इधर? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. ये सब जगह एक ही सिंबल क्यों है? मतलब एक जैसा ही है बट अलग अलग है. ट्रायंगल ट्रायंगल है. ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. तो अभी अपन को क्या करना है? Follow Nightman's trail, look around the crime scene. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale.
I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Wait. This sound is so creepy. बट मैं यहाँ पे आया हूँ, बट मेरे को यहाँ पे कोई फुट नहीं दिख रहे हैं उसके. बट अपने को तो ट्रेल फॉलो करना है ना, अपन यहाँ क्यों आ रहे हैं? The tracks lead into the water. Where'd you go from here? What the fuck? Oh, something. The presence. Oh. Oh. Nightingale isn't far. ये इधर भी नहीं लगेंगे, इधर भी नहीं लगेंगे, इधर. ओके, ये इधर लगेंगे. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Sorry. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle?
What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to... The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Okay. Locate the witch hut. Witch hut तो यही तो थी अभी. विच हट से ही तो आए थे अभी अपन. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Get the lights working in the witch huts. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Locate a fuse in images. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Okay. Witch hut. Okay. सब automatic हो रहा है. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual.
To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Words on the heart. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. The opposite of sunset. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okay. अब जनरल स्टोर पे छोड़ के आया भाई वो लिटरली. ट्रैक 19 they perform the ritual opened. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. चलो अब अपने को कहाँ जाना है? Perform the ritual to open the overlap. Check the general store. अब general store कैसे जाएंगे अपन? जनरल स्टोर कैसे जाएंगे अपन? गाड़ी से? जनरल स्टोर यहाँ पे है. अपने को इधर से ही चलना पड़ेगा मतलब. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. यही है ना जनरल स्टोर? हाँ. What the hell, bro?
What the hell? What the fuck? My God, भाई उसके दो रैप्ट में हम चित हो गए भाई. भाई गलती मार दिया ना उसने, कसम से भाई बहुत गलती मार दिया. भाई इतना गंदा कोई कैसे मार सकता है यार. भाई चालू हो जा भाई. हेलो. Toggle flashlight boost to burn through the darkness around you. I should keep looking here.
text on the heart is clearer now. The wave crashed on the. Sounds literary. But what does it mean? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Check the lady to the corner. क्या करूँ इसका लॉक नहीं खुलेगा क्या इधर Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They'd been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. गोल क्या है अपना भी परफॉर्म द रिचुअल टू ओपन ओवरलैप क्या मतलब मेरे को वापस ओवरलैप के लिए वहां जाना पड़ेगा मैप के हिसाब से देख के जाना पड़ेगा मेरे को
यही रास्ता है. किधर जाना है देन? Crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. What the hell is going on? Enter the overlap through which led. Okay. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things.
मैं एक ही जगह से निकल गया। What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. अबे मैं एक ही जगह बार बार लूप हो रहा हूँ, वही ना? ओके, ऊपर कोई तो खड़ा था, गायब हो गया। He's here. Nightingale. Defeat Nightingale. दो गोली में उसको मार दूंगा, seriously. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. Wait guys, एक I'll second make you रुको। pay. You're in over your head. He descended into the tunnels from the Dark City into the ocean of darkness. Next up, Wait यार। Caldera Street Station. Something, a presence rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. Wait यार, रूम में चुही आ गई है, रुको उसको थोड़ा भगाने दो guys, The wait। cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake.
ओके आई एम बैक। अरे यार चुहिया मिली नहीं भाई रूम में, आई तो थी भाई, मेरे पैर पे टच हुई, टेबल के ऊपर रखे, मैंने एक सेकंड नीचे रखा था, एकदम से आई भाई, पता नहीं क्या कर रही थी। ओके Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. ठीक है, अभी यहाँ से नहीं जा सकता मैं। मैं कोई तो ट्रेन जैसे सबवे में जा रहा हूँ। अबे ना मेरे पास एमो है उसके लड़ने जितनी, ना मेरे पास लाइट है उसके लड़ने जितनी, क्योंकि तुमने पहले ही वेस्ट करा दी है इतनी, और मैंने इतनी सारी चीजें कलेक्ट करी थी भाई। बट ये टॉर्च का जो सीन है भाई, ये इतना वियर्ड है। मतलब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई तुम वो, मैं उस टॉर्च को जलाऊं इतनी देर तक, उसके बाद वो एक मार्क देगा, वहां पे मैं फायर करूं, वो ब्लास्ट होगा, एंड वो टॉर्च में 3 शॉट में उसे आता है एक डॉट, उसके बाद भी वो जिंदा हो जाता है। तुम बिलीव करोगे भाई, इतनी बैटरी में कहाँ से लाऊंगा भाई, वो कम से कम 2-3 बार चार्ज हो रही है भाई, वो इतनी बैटरी कहाँ से आएगी? कुछ तो दिमाग लगाओ। नहीं, इस गेम में लॉजिक, लॉजिक भाई लॉजिक। तुम और एमो कितनी दे रहे हो तुम? नहीं, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इतनी एमो से? भाई मैं उसको 10 एमो में मैं उसको निपटा दूंगा भाई, कुछ भी चाह रहे हो तुम। उससे पहले तुमने 2 मॉन्स्टर दे दिए थे, उससे पहले तुमने एक बड़ा मॉन्स्टर दे दिया इसी के जैसा। नहीं मतलब कुछ भी चाह रहे हो तुम, हम क्या करें? हैक्स ऑन कर ले कि एक शॉट में बूम। ऊपर से 3 को वो देख के तुमने कहते हो कि अपग्रेड कर लो भाई, वो 12-13 तो मिनिमम चल रहा है उधर अपग्रेड करने के लिए चीजें। ऊपर से भाई ये मरने के बाद इतना लोड लेता है, ऊपर से वो गाड़ी के टाइम पे भी ये इतना लोड लेता है।
चलो फिर से लड़ने। अरे हील तो करने दे मेरे काका। Get away! I have to get to safety. अरे वो हील तो करने दे मेरे को, हील तो करने दे मेरे को काका मेरे। हील ही नहीं करने दे रहा भाई वो मेरे को। वो कह रहा भाई मैं तो पहले मारूंगा भाई। हील ही नहीं करने दे रहा भाई कसम से। Mm, 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 mm.
डिफीट नाइट एंगल अभी तक आ रहा है बे। पता नहीं एक तो मैं कौन से पे जा रहा हूँ, ऊपर से भाई ये बार और पीछे तंग करने आ रहा भाई। क्या हुआ, मर गया वो? Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? I'm out to escape. I'm in danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. What's happening, bro? Hello? Hey! ये वही है, वही है। Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. Alan Wake. Let's go, boy. Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. End of chapter. Oh my god, seriously भाई, ऊपर से इसका sweet music bro, listen to this music. In the dark, miles apart.
भाई मतलब इतना सेटिस्फाइंग म्यूजिक बनाया है ना. भाई लवली म्यूजिक भाई. भाई मैं तो नाइट में यही सॉन्ग सुनने वाला हूँ भाई. भाई लिसन भाई सीरियसली भाई क्या सॉन्ग है भाई. लेट्स गो. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex. Alan Wake. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Optional, investigate the previous flooded area, take the car back to the bright. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. चलें फिर. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. ऑप्शनल है. कौन करेगा फ्लडेड एरिया. देखना पड़ेगा क्या फ्लडेड एरिया भाई. Take your time, but you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. बट यार मेरे को तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा फ्लडेड एरिया में. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? अभी अपने को क्या करना है. ऑप्शनल इन्वेस्टिगेट द फ्लडेड एरिया. बट यार यहाँ पे मेरे को कुछ तो लग नहीं रहा फ्लडेड एरिया में. इनसे बात करनी पड़ेगी क्या.
The cult is leaving supplies around for themselves. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. और क्या क्या है इधर? कुछ काम का है, कुछ और नहीं है? मैं अटक क्यों गया बे इधर? उधर जाती अलग ही साउंड आने लग गई। ये क्या बात हुई? तभी मेरे को कहाँ जाना चाहिए? आई थिंक जाना तो ऊपर ही पड़ेगा अपने को। What the hell? Don't forget to save heavens. Are turning into monsters. यार ना मैंने इसके कुछ बिगाड़ा ना इसको कुछ कहा, फिर भी मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है।
अरे 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 इतना लैग। ओ यहाँ पे कुछ एरो बना हुआ आ रहा है बे। स्ट्रीम साइड स्टैश की ओके। इधर क्या है? There's something written here. A poem? Or a riddle? 1 bird for light, 2 for darkness, 3 birds for a fright, 4 for a struggle, 5 birds for injury, 6 for mixery, 7 for the ending, whatever it may be. यहाँ पे अपन कुछ लाके लगाना पड़ेगा आई थिंक। अबे यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए तो मुझे लग रहा है। एक तो दोनों की कमर पे है, ऊपर से पीछे घूम के कैसे मारूंगा मैं इन्हें? मतलब इनके पीछे जाके कैसे मारूंगा भाई? इश इश।
Let's start. क्या मतलब मैं फिर इतना पीछे आ गया भाई, ये पागल आगल है क्या? इतना पीछे कौन ला देता है यार? Even the animals are turning into monsters. हाँ लगेगा फिर ये, अच्छा यहाँ लगेगा। These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. जाना तो अपन को यहाँ पे अभी खैर।
Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Another one of those rhymes. मेरे को तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रही इतनी सारी राइम्स का कर क्या रहे हैं ये Rest easy, buddy. इधर कहीं भी इसका पासवर्ड तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Doesn't look right. और कुछ है इस घर में
चलते अभी तक घर से बाहर। और तो अपन ने बाकी सब एक्सप्लोर कर ही लिया है इधर का। ये इसकी घर की दूसरी एंट्री होगी। यहाँ पे भी कागज रखे हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है। An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location. And a counterpoint, a work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality. A blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Okay. ये क्या है पे? A lunchbox again. Who's leaving these out here? ये लंच बॉक्स आ कहाँ से रहे जंगल के अंदर? पहले मेरे को ये जानना है। है ना गाइस? ये कर क्या रहा है इधर?
अपन ने सब जगह तो एक्सप्लोर कर ली थी ना। पूरा जंगल अपन ने एक्सप्लोर कर लिया। वो फिर से आ गया बे। तू उधर जा रहे। ये मैं इधर जा क्यों नहीं पा रहा हूँ बे? इधर क्या अड़ क्या रहा है? इधर ही जाना पड़ेगा। और इधर तो वो अभी आया था ना, वो खड़ा सामने। देख तू मेरे को कुछ मत कह, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा, चुपचाप चला जा। कुछ तो चमक रहा है पीला पीला। -7 नहीं, मैं क्या लिख रहा है? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं? 7 - 2 5 होता है, ये तो सबको पता है। इतना क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बे? नहीं अभी इसका करना क्या है मेरे को? 7 - 2 का क्या करना है? -2 का क्या करना है भाई? करना क्या चाहिए 7 - 2 का? 5। इसके आगे क्या क्या करना है? इधर भी कुछ लिखा है बे। 6 + 2 6 + 2 8 3 + 3 6 रॉक ट्री आर यू। ये इसका पासवर्ड होगा, बट मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है लॉक में इधर। बट मेरे में तो सारा ब्लर ही आ रहा है क्योंकि अपने हाई ग्राफिक्स नहीं चल रही इधर। सॉरी, मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा यार, तू मेरे को बाद में दिक्कत देगा इसलिए। ये कहाँ गया मैं? Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods,
Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element: danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Okay. सो गाइस आज के लिए अपन इतना बहुत रखते हैं यार। अपन ने कितना घंटा खेल लिया, अपन को देखे तो अपन ने भाई 3 घंटे तो खेल लिया ना गेम। 3.5 घंटे में से चलो मैं आधा घंटा तो हटा ही देता हूँ, क्योंकि भाई बीच में 10-15 मिनट मैं गया था एंड 10 मिनट का अपना वो होता है। ठीक है, अपन ने 3 घंटे खेल लिया है गेम। 2 hours 47 minutes दिखा रहा है इधर, मतलब अपन ने काफ़ी खेल लिया है गेम। अब अपन खेलेंगे गाइस आगे, देखते हैं कब कंटिन्यू करनी है इसकी स्टोरी। फर्स्ट पार्ट पे देखते कितना प्यार आता है, लव एंड सपोर्ट कितना आता है इस पे। न्यू सीरीज है एंड न्यू हॉरर गेम है। ये 2023 का सबसे लेटेस्ट हॉरर गेम है भाई, ये सबसे लेटेस्ट, क्योंकि ये 27 अक्टूबर को रिलीज हुआ था 2023 में। एंड अभी इसका डीएलसी पैक आएगा दिसंबर में, अभी एक और इसी मंथ आने वाला है इसका एक और डीएलसी पैक। सो लेट्स सी। तो अभी पूरा लेटेस्ट है, एकदम ब्रांड न्यू गेम है ये। और ये PS5 के लिए ही आया है अभी। मैं करंटली ये भी बता दूं, पीसी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। मैं पीसी पे ही खेल रहा हूँ, बट मेरे पास कुछ है टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मैं खेल रहा हूँ। बट ये PS5 के लिए है। एंड अगर अभी पीसी पे आया तो इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो मेरा जीपीयू सपोर्ट भी नहीं करता है। 2060 इसका मिनिमम है, बिकॉज 6 GB इसको VR रैम चाहिए अपनी जीपीयू की, और मेरी की तो 4 GB ही है, तो 2 GB कम पड़ती है इसकी जीपीयू की मेमोरी। तो उसके ऊपर है, तो तुमको इस पर अच्छा खासा पीसी चाहिए इसको खेलने के लिए, तो ये ध्यान रखना। मैं तो प्रेफर करूँगा 2060, तो मिनिमम क्या ही चलाना 38 ले लेना, ताकि मीडियम ग्राफिक्स तो चले ही चले। मेरा यार GTA 5 तक चल जाता है, वो भी इतना हाई ग्राफिक्स गेम है, मतलब वो भी 1080 भी चल जाता है, इतना अच्छा 60-70 FPS देता है भाई आराम से मेरे को ऑन स्ट्रीम 1080p पे। पता नहीं इस पे क्या ग्राफिक्स है भाई, और जबकि ये तो उससे छोटा है। GTA तो अपना अब आजकल 110-120 GB का चला गया है, ये अपना 90 GB का है। हिटमैन जितना है, मेरा हिटमैन भी इतना लैग नहीं होता जितना ये, मतलब ये लैग तो नहीं हो रहा बट ग्राफिक्स नहीं चल पा रही है, समझ रहे हो। गॉड ऑफ वॉर भी बड़ा गेम था, 65 GB या 70 GB के आसपास, बट उसमें लैग हो रहा था बिकॉज वो लोड बहुत ज़्यादा ही ले रहा था। अभी मैं बताऊँ ना मेरा एलॉन वर्क कितना ले रहा है, मैं तुमको बताता हूँ कितना ले रहा है ये मेरा GPU। कहाँ है मेरा, हाँ पूरा GPU में से मेरा ये जा रहा है 70 to 85 तो जा ही रहा है, 70 to 85 बोल रहा हूँ मैं। इतना GPU ये ले रहा है, और साथ में CPU का अलग यूज़ कर रहा है। ये CPU भी मेरा 70% यूज़ हो रहा है, और ऊपर से मेरी रैम कितनी ले रहा है, रैम भी मेरी ये 80% ले रहा है, 70 से 80% भाई। मतलब इसके लिए तुमको चाहिए अच्छा खासा पीसी ये गेम खेलने के लिए, तो ध्यान रखना कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, और इसकी स्टोरी भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। एंड ये आया था 2010 में आया था एलन वर्क फर्स्ट पार्ट, आई थिंक सो। मैं देखूँ तो एलन वर्क जो है ये तो अभी आया है, 2 की रिलीज डेट है अपनी 27 अक्टूबर, ठीक है। एंड फर्स्ट जो आया था इसका उसकी रिलीज डेट थी 23 नवंबर 2010। तो देख लो भाई, पूरे इतने टाइम बाद आया, 13 साल बाद आया भाई, और इतनी खतरनाक ग्राफिक्स के साथ में भाई, लिटरली। और भी मैं गेम ढूंढूंगा जो अच्छा खासा चले, मतलब इतना ज़्यादा ग्राफिक्स लो नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ GTA 5 RP भी करते हैं अपन वापस कंटिन्यू, जैसे पहले करते थे। पहले भी अपन कम ही करिए, ज़्यादा नहीं करिए, बट ठीक है अभी देखते हैं, करते हैं वापस कंटिन्यू। स्ट्रीम के लिए यार मैं आज
आने वाला था जल्दी, मैं शाम के टाइम भी करने वाला था, बट मैं कल रात को देखने लग गया वेब सीरीज। भाई मैं कल पूरी स्वीट होम देख डाली, मतलब 4 एपिसोड पहले ही देख लिए थे, बट मैंने उसके बाद के सारे देख लिए। स्वीट होम सीजन 1 के 5 एपिसोड और रह गए थे मेरे, 5 ही 6, और 8 एपिसोड अलग, वो पूरा देख लिया मैंने रात भर में। अब मेरे को स्वीट होम का सीजन 3 चाहिए भाई, लिटरली स्वीट होम का सीजन 3 के लिए भाई। इतनी सीजन स्वीट होम के सीजन 2 की जो एंडिंग थी ना भाई, तुम अगर देखो भाई, वो इतनी ओपन एंडिंग है ना, इतनी ओपन एंडिंग, तो उसमें कुछ भी लगा सकते हो कि सीजन 3 में ये हो सकता है, ये हो सकता है, अपनी थ्योरी लगाते जाओगे, पागल हो जाओगे। इतनी ओपन एंडिंग दी है भाई वो, बहुत खतरनाक भाई। तो गाइस इस वाली स्ट्रीम को अपन अब करते हैं यहीं पे एंड रिकमेंडेड करूंगा मैं भाई तुमको ये गेम खेलने के लिए भी और स्वीट होम देखने के लिए भी। भाई स्वीट होम भी काफ़ी मस्त वेब सीरीज है, यू कैन चेक आउट। एंड मैं अभी एक और वेब सीरीज चालू करूंगा, बट वो अभी मैं देख के बताऊंगा अपना ओपिनियन कैसी है वो, तो देखते हैं। सो अभी ये वाली स्ट्रीम को अपन करते हैं यहीं पे ओवर। बाद में देख लेना जिनने नहीं देखी है स्ट्रीम, और जो लाइव पे देख रहे थे तो तुमको पता लग ही गया होगा ये कैसा गेम है। 2023 का ये सर्वाइवल हॉरर गेम है, और इसका जो डेवलपर है वो है अपने रेमेडी एंटरटेनमेंट, और ये एपिक गेम्स पे आई थिंक ये पीसी के लिए, ओके पीसी के लिए भी आ चुका है। ओके पीसी के लिए भी आया था। ओके सॉरी मैंने रॉन्ग बता दिया तुमको, ये पीसी के लिए भी रिलीज हो चुका है, बट इसका जो है वो सिर्फ एपिक गेम्स पे आया है। ओके या ये एपिक गेम्स के अंदर ही तुमको मिलेगा, और इसकी प्राइसिंग मैं बता दूं इस गेम की कि कितने में तुमको पड़ेगा। सो बताता हूँ मैं तुमको ये कितने का पड़ेगा। ये पड़ेगा तुमको GTA जितना ही, इसकी प्राइसिंग है 2748, मतलब 2750 मान लो, इतनी प्राइसिंग है ये आपको पड़ेगा एपिक गेम्स पे। बट मैं बोलूँगा यार तुम पीसी इसके लिए हाई एंड चाहिए तो तुम PS5 ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि PS5 अगर तुम्हारा 60 तक आ जाता है और उसके बाद तुम CD बाय करते हो, तो CD की क्या प्राइस पड़ेगी मैं वो भी बता देता हूँ। तो इसको तुमको CD पड़ेगी इसकी PS5 के लिए तुमको पड़ेगी 3250, मतलब ठीक ही है यार। तुम उधर से बाय करके इधर लोगे, मतलब PS5 ले लोगे तो तुमको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुमको उसमें और भी गेम खेलने के लिए। बट हाँ बाय करनी पड़ेगी, बट ठीक है यार, वर्थ इट है PS5 इन सब गेमों के लिए, हाई एंड पीसी से बेटर। तो मैं यही बोलूँगा तुम PS5 की तरफ ही जाना अगर तुमको खेलना है ऐसे हाई एंड ग्राफिक्स गेम, क्योंकि वो भाई काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है तुम सबको। सो मिलते हैं गाइस अब अगली स्ट्रीम में। आई डोंट नो मैं इसकी करूँगा या किसकी करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता रहता मैं कब कौन सी स्ट्रीम करता हूँ। तो यार देखते हैं अब कौन सी स्ट्रीम होगी अगली। जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं आपसे कल। जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस आउट।